first of all, I would like to say from the past couple of days, markets have been quite volatile. और अगर आप देखेंगे तो markets, yesterday closed at about 18,000 levels, and today it opened gap down and recovered quite well. Lot of people who had carried longs yesterday, जिन्होंने long position बनाई थी अपनी, कल वो SGX निफ्टी देके काफी hesitate कर रहे थे मॉर्निंग में. एंड मैं यही कहूंगा कि मार्केट्स में we can take actions within the time within 9:15 to 3:30 p.m. हम 3:30 के बाद चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते because market open नहीं होता. So the best way is to follow the plan. The best way solution is basically to trust the process. The best solution is basically to have faith in your process and have a proper risk management rules in place in order to, I'm not saying to make money in the market, but to survive in the market. That is something which is really important. हालांकि आज का जो हमारा सेशन है उसके बारे में हम समझेंगे कि बेसिकली जब ऐसे सिचुएशंस होते हैं, गैप डाउन्स होते हैं या गैप अप्स ओपन होते हैं, कैसे हमको चार्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर रिजेक्शन हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, और किस तरीके से उसको ट्रेड कर सकते हैं. लेट मी टेल यू, ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स, रिजेक्शन स्ट्रेटजीज, इसको आप कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, चाहे वो इंट्राडे चार्ट हो, पोजिशनल चार्ट हो, डेली चार्ट हो, वीकली चार्ट हो. You can use it on any kind of charts which you like. So we are going to basically first start with the introduction. हम लोग पहले introduction से start करेंगे, talking about the first part which is trading breakout. What is basically trading breakout? Breakout जो होता है ये potential opportunity है market में that occurs when the price of the stock moves above the resistance level, जिसको हम लोग classic resistance level कहते हैं, और moves below the support level on increasing volume. So दो चीजें इंपॉर्टेंट है. प्राइस अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट मींस मार्केट्स आर गोइंग टू डू वेल, देयर इज अ ब्रेकआउट. प्राइस अगर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है, दैट मींस देयर इज गोइंग टू बी अ डाउनफॉल व्हिच कैन बी एक्सपेक्टेड इन द मार्केट. आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड, हम एक अगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं विद अ प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, तो हमको एक पॉसिबल अच्छा खासा एक एंट्री एग्जिट पॉइंट्स देखने को मिल सकता है विद ऑब्वियसली योर रिस्क मैनेजमेंट. सो ब्रेकआउट्स आप सब लोगों ने सुना होगा, आप लोग ट्रेड भी करते होंगे, एंड यू माइट हैव सीन इट ऑन द चार्ट अकरिंग एवरी टाइम, बट हाउ वी कैन ट्रेड ब्रेकआउट्स आर समथिंग व्हिच आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. एंड सेकंड पार्ट इज रिजेक्शन. अभी रिजेक्शंस होते क्या है? रिजेक्शंस बेसिकली अगर देखा जाएगा तो इसको हम लोग एक रिवर्सल भी कह सकते हैं, जहां पे एक बार प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद एक रिट्रेस करता है प्राइस. द प्राइस रिट्रेसेस टू अ सर्टेन सपोर्ट लेवल, गिव्स यू द सपोर्ट और रेस्पेक्ट्स द सपोर्ट एंड देन मूव्स फॉरवर्ड. सो either you're trading a breakout or a rejection, what kind of a trader you are, we need to understand that, and understanding where you are going to enter, how your stop losses are going to be, either of one of the or both the can work beautifully. Trading strategy aims to identify or where the market is reluctant above a certain level. तो इसका examples हम लोग देखेंगे आज के डेट. First of all, we are going to discuss about few breakout strategy. तो सबसे पहले हम देखेंगे triangle breakout strategy. अभी मार्केट में आप एक सर्टेन लेवल पे आपको सर्टेन पैटर्न्स दिखाई देंगे, या फिर लेट्स से देयर आर सर्टेन रेजिस्टेंस लेवल्स व्हिच आर ऑलवेज देयर इन द मार्केट, एंड इन ऑर्डर टू ट्रेड सच पैटर्न्स और ट्रेड सच रेजिस्टेंस लेवल, वी नीड टू बी वेरी श्योर. हमको बहुत ही श्योर होना चाहिए कि हम कौन से लेवल पे हमारी एंट्री और एग्जिट रहेगी, और बेसिकली हमारे स्टॉप लॉसेस कैसे रहेंगे. सो दिस इज वन काइंड ऑफ अ ट्राइंगल जिसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न. ये एक ट्राइंगल ब्रेकआउट है. जैसे हमने डिस्कशन कर रहे हैं ब्रेकआउट के बारे में, आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, एंड एट द लोअर एंड देयर इज अ येलो लाइन व्हिच इंडिकेट्स दैट प्राइस इज मेकिंग अ हायर लो. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो ट्राइंगल पैटर्न आप देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे नजर आता होगा कि प्राइस यहाँ पे हायर लोज बनाते जा रहा है
बट जो है हायर हाई नहीं बनाया है, देयर इज अ रेजिस्टेंस व्हिच इज देयर. सो ऑब्वियसली अगर एक पर्टिकुलर प्राइस सर्टेन रेजिस्टेंस लेवल को बार बार टच करता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर कैन बी अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट व्हिच कैन हैपन. If the price trades above the resistance level, there is a possibility the price can break out and there can be a good risk reward trade which one can get. This is one kind of a triangle pattern which is available, which we also call it as a ascending triangle pattern or a continuation chart pattern. आप इसको upward trend market में देख सकते हो, या फिर कोई strong reversal आने वाला है market में. If there is a strong reversal in the market, you will basically see this particular type of a pattern which is there. Now, where and how you enter the trade? Once the prices have traded outside the levels of this particular triangle and is consistently trading above basically the triangle, look at the volumes and then enter the trade with the minimum stop loss below basically a certain level. So that is basically a triangle breakout pattern. Similar to, ascending triangle, there is also a descending triangle which we call as a breakdown. आप देखेंगे तो यहाँ पे basically price is making a lower high and there is a low which is basically constant. इसको हम कहेंगे support line, right? This support is a very strong support wherein multiple rejections can be seen. Okay, now I'm also bringing here rejections. ये जो support के पास है, every time the price comes to this support, it bounces back. Every time the price comes to this support, it bounces back. The price again basically came to support, it bounced back, but when the candle closed below the support level, तो यहाँ से basically एक selling आई थी, and this is where the triangle breakout happened. So this is one kind of basically a pattern जहाँ पे आप देखेंगे एक triangle breakdown या breakouts हो रहे हैं, और आपको ये 5 minute, 15 minute, 30 minute और maybe hourly और daily chart में भी देखने को मिल सकता है. Right, so this is basically a kind of a descending triangle pattern जिसको हम कहते हैं, wherein every higher level पे there is a selling which is coming in with the possibility that the prices are going to move downwards. That means sellers are pushing the price down. There is a support level. Once that support is broken, it's a good entry point wherein one can enter into the trade with a good risk reward. Okay. Third type of a triangle, which is also called as a symmetrical triangle. Now, unlike basically your ascending and descending triangle, symmetrical triangle, ये वो reversal भी हो सकता है या continuation भी हो सकता है. The symmetrical triangle can be reversal also and continuation as well. Okay. So if you see, there is a resistance line which is sloping downward and there is a support line. That means price is consolidating within this particular triangle. Now, if you find this particular triangle like this, और अगर आप breakout trader हो, तो do not attempt to trade between this particular levels. ये particular triangle level पे आप अपनी कोई भी position ना बनाएं. अगर आपको confirmation मिलता है, once you get the confirmation that the prices have broken out of the triangle, then only you enter the trade. I'll repeat myself once again. If you see such kind of a pattern, which is symmetrical triangle kind of a pattern, stay away until the prices breaks out from the triangle. Because the triangle within this particular triangle or from this triangle, the price can break out or can break down as well. And you want to trade into the direction where the prices are breaking out, and this can be a good risk reward trade if you enter after the breakout happens. Okay, so ये है एक type का symmetrical triangle pattern which is available. Okay, next is basically the head and shoulders pattern. Now, ये आप सब लोगों ने सुना होगा ये particular pattern के बारे में, the head and shoulders pattern, classic head and shoulders pattern, which we can see on any time frame. आप 5 minute के time frame, 30 minutes, 60 minutes, और maybe even 120 और daily chart में भी आपको इस तरीके के patterns देखने को मिल सकते हैं. The head and shoulders patterns tries to predict bull market and bear market reversals, right? These are strong patterns which come out of, on a daily chart. अगर आपको ऐसा pattern daily chart में दिखाई देता है, that means the probability after breaking out, the price breaking out after this neckline, which is called over here yellow line, if it breaks out, then there can be a strong reversal which can happen. This is a normal head and shoulders.
नॉर्मल हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इज अ बेरिश पैटर्न, ये एक टाइप का बेरिश पैटर्न है, और यहां पे ये नेक लाइन है इज समथिंग विच वी नीड टू वेट फॉर. देयर इज नो ट्रेड विच वन हैज टू टेक इफ यू आर अ ब्रेकआउट ट्रेडर. अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो आपको ये पर्टिकुलर लेवल पे जब ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है आप ट्रेड लेना अवॉइड करें, अनलेस जब ये ब्रेकआउट होता है. और एक बार ये ब्रेकआउट होता है, डू नॉट हेजिटेट टू एंटर इनटू द ट्रेड, राइट. The blue line which you see over here, the arrow line, can be your target from the basically the neckline which is broken or the support line which is broken. Okay. And the stop loss can be a candle above that, can be your stop loss, or the high of the previous day's candle can be your stop loss. ये आपका stop loss हो सकता है. A classic head and shoulders pattern can be seen in a bull market. अगर market जो है उसको अगर strong reversal लेना है तो आपको ये bull market में नजर आएगा, और बेयर मार्केट में इसका इनवर्स नजर आएगा जिसको करते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न. ओके, सो वी विल ट्राई टू सी बेसिकली लाइव चार्ट में, जब हम लोग थोड़ी देर में इसके बाद देखेंगे लाइव चार्ट्स में कि किस तरीके से हम हेड एंड शोल्डर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फ्लैग पैटर्न. नाउ दिस इज वन मोर पैटर्न विच इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न. नाउ लॉट ऑफ पीपल दे ट्राई टू ट्रेड दिस फ्लैग पैटर्न. ये क्लासिक फ्लैग पैटर्न है. जैसे एक स्टॉक है, एक बहुत ही अच्छी रैली लगा रहा है, एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है, उसके बाद एक शॉर्ट टर्म हॉल्ट लेता है, एंड देन बेसिकली द रैली कंटिन्यूज. नाउ लॉट ऑफ पीपल मेक अ मिस्टेक. फ्लैग पैटर्न में लॉट ऑफ पीपल मेक अ मिस्टेक ट्रेडिंग बिटवीन द फ्लैग व्हेन द प्राइसेस आर इन कंसोलिडेशन. One should not make a mistake in terms of trading inside the flag. If you are a breakout trader, either you enter at the first breakout, or you enter at the second breakout which is mentioned here. Okay, the reason why I'm telling you this is, lot of time if there is a pattern failure, this flag pattern can fail and the prices can reverse back at the original level, right? So a flag pattern is though a continuation pattern, but where you want to enter into the trade, आपको कहां पे enter करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे यहां पे एक शॉर्ट टर्म अगर आपको ब्रेकआउट नजर आता है, एक कैंडल का क्लोजिंग बहुत ही हेल्दी है विद द वॉल्यूम, देन यू कैन एंटर इनटू द ट्रेड विथ बेसिकली अ मिनिमम स्टॉप लॉस ऑफ बिलो दिस कैंडल और प्रीवियस कैंडल. व्हाट कैन बी योर टारगेट? द डिस्टेंस ऑफ दीज टू बेसिकली पैरेलल लाइंस, जो आपका टारगेट प्राइस हो सकता है. जब प्राइसेस फ्लैग से ब्रेकआउट होते हैं तो बहुत ही क्विक मूवमेंट आता है. सो इफ यू आर ट्रेडिंग अ फ्लैग पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिकली you should be basically looking at the breakout and be very quick in your entry and exits if there is any. Okay, so ये और एक type का pattern है which is also called as a breakout if you want to trade a flag kind of a pattern. Now talking about basically reversals or rejections, ये मैंने गोल्ड का चार्ट यहाँ पे लिया हुआ है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे, there is a gold chart which I have taken, and you can see over here the prices have fallen to a level. There is a bounce which has come, and then there is basically again a retest which is happening. So there is a rejection which you can see at 1680. अभी हम लोग ने इसके पहले we have seen certain examples of breakouts. Now here I am showing you one example of rejection. Okay, you can call it as a double bottom pattern. I would like to call it as basically a rejection. How the prices have rejected. Once it has rejected, moved up. Second times it has rejected and it has moved up. Now, how to trade a rejection strategy? If you see, when the prices are falling, wait for the first bounce. Majority of the time, ये जो bounce है, अगर market में fall आ रहा है और ये bounce है, वो फिर से एक बार वही लेवल पे रीटेस्ट करने आएगा, because there is a supply which is there. Once the retest is failed, that means rejection is being confirmed. That is the time one can enter into the trade at these two candles. Either you enter at a red candle or a green candle. यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रिजेक्शन में, my stop losses will be below this particular candle or below the low of the double bottom. My target can be quite good in terms of this, and if you see the prices have moved up, there is basically a
a short term correction and now there is a rejection. That means my resistance has now become my support level. So if you see over here, there is a short term bounce which has come and there is a rejection which is there and then the prices have rallied. You can see such kind of a pattern. आप ये टाइप का जो पैटर्न है या फिर ये डबल बॉटम अप कह लीजिए या डबल रिजेक्शन कह लीजिए, आपको बहुत सारे टाइप के चार्ट्स में नजर आएगा. Rejection strategies are very good if you understand and your supports and resistance levels are right. Then this can be a good risk reward trade जो आपको देखने मिल सकता है. And I'll show you some of the charts which are there जिसमें हम rejections देख सकते हैं. Apart from that, डबल टॉप कह लीजिए या फिर डबल रिजेक्शन स्ट्रैटेजी कह लीजिए जो हमने निफ्टी में देखा, राइट. प्राइजेस कुछ इसी प्रकार से मूव कर रहे थे निफ्टी में एंड द प्राइजेस मेड अ हाई बट इट वाज नॉट क्लोजिंग अबव सर्टेन लेवल. देयर वाज रिजेक्शन एट सर्टेन लेवल, right, and from there the prices were coming down. Now a lot of people, they fear to short at a certain level because there is a resistance level or a rejection level at certain price. Let me tell you, if you are getting the confirmation, if the candle closing is very strong below the resistance line, then you can go forward and short a particular stock with a minimum stop loss which is there. ये जो प्राइस है या ये जो पैटर्न है, आप इसको इंट्राडे में आप इसको पोजिशनली भी ट्रेड कर सकते हैं. ऑब्वियसली द रिस्क हैज टू बी मैनेज्ड अकॉर्डिंगली, राइट. Once the prices have fallen down, see how the second rejection is coming over here at the resistance level. Now my support will become my resistance level. और एक बार जो bounce दे रहा है, there is a rejection here, there is a rejection here. There are two trades which you're getting of quick, in quick time. And that is how you can identify, certain rejections which are there. These are purely price action trades. I'm not using any indicator. मैंने कोई भी indicator का use नहीं किया है. मैंने कोई भी type का basically यहाँ पे averages का use नहीं किया है. आप price को देखें, price को study करें और price क्या कहना चाह रहे हैं और price क्या करना चाह रहे हैं, उसी को आप trade करें. That basically gives you the understanding in terms of how you can trade the rejection strategy. मैं आपको कुछ examples, अभी live examples दिखाऊंगा. And there is a very important slide after that, which I'm going to basically show you after the examples are done. So let me go to our terminal, which is terminal X3, and show you, how the breakouts and rejections are taking place. Let me tell you all the examples. जो हम लोग आज example discuss करने वाले हैं, ये सारे, is only for the illustration, or I would say for learning purpose. Do not take your any position based on the discussions which we are having right now. Please do your own analysis, your own study, and then basically enter the trade. Now, my first example which I want to take, one of the stock which has been trading or rallying quite well, and let me take the example of this particular stock. Now look at how the stock has moved, and look at the volume, the volume, how the volumes have gone up over a period of time, right? Now, if you see over here, and this is a daily chart, ये simple daily chart मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और अगर आप यहाँ पे एक horizontal line insert कर ले, तो आपको दो चीजें देखने मिलेगी. दो horizontal line हमको ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं एक horizontal line ऐड कर दूंगा. पहली लाइन जो है मैं कहीं पे यहाँ पे ऐड करने वाला हूं, और दूसरी लाइन जो है मैं ये बॉटम पे ऐड करने वाला हूं. तो ये जो दो लाइन है मैंने ऐड कर लिए. अब आप ये चार्ट को सिर्फ यहाँ पे डेली चार्ट पे देखें. There is a basically resistance at this level, there is a support at certain level. So let me just properly draw a support. There is a support at certain level and a resistance at certain level. If you see the prices, the first rejection came in here, the prices came down, right? It again made a high. Now study this. How you study basically this is every time the candle was trying to go up, but क्या है, क्लोजिंग देखिए 330 के ऊपर की क्लोजिंग कभी नहीं आई है, 330 के ऊपर की क्लोजिंग कभी नहीं आई. ओके, एंड रिजेक्शन आया एंड द प्राइसेस करेक्टेड टू 200 ऑड लेवल्स, राइट.
The prices again made an attempt after few months, made an attempt to go up. Again, there was rejection and there was rejection here. But then there was a strong breakout which came in. अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही strong breakout आपको यहाँ पे देखने मिला है. This basically indicates that the breakout has happened, right, in this stock. And within 1 or 2 days, the stock has rallied from 330 after the breakout to 380. 50 रुपए का मूवमेंट हमको 2 दिनों में देखने मिला है. हालांकि ये जो ब्रेकआउट है वो ऑलरेडी हो चुका है. नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द प्राइसेस वर नॉट क्लोजिंग अबाउट दिस लेवल, बट व्हेन इट क्लोज्ड ओवर हियर, जब क्लोजिंग हुआ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ. नाउ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई, हमको यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म चार्ट में जाना है. दैट मींस हम लोग को यहाँ पे 60 मिनट के चार्ट में जाना है. इफ यू कैन सी अ 60 मिनट चार्ट, मानवी, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. यस चिराग. ओके, नाउ लुक एट दिस 60 मिनट चार्ट. ये क्या कह रहा है? अगेन द सेम स्टोरी. डेली चार्ट में तो ब्रेकआउट मिला है, बट द प्राइसेस हैव क्लोज्ड वे अबव द लेवल. नाउ लुक एट दिस 60 मिनट चार्ट, वेदर द कैंडल हैज क्लोज्ड अबव द लेवल, which is absolutely yes. That means all the supply has been exhausted, all the supply is over, and now there is a strong breakout which we have seen. There is a very, very high possibility if the stock comes back here, and I want to see how the stock behaves again at 330 level. मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर ये स्टॉक फिर से घूम के नीचे की तरफ आता है तो हमको ये ऑब्जर्व करना है कि 330 लेवल पे किस तरीके से बिहेव करता है. Right, and let me tell you how it behaves. Right now, ये कैंडल को मैं थोड़ा सा नीचे पुश कर लेता हूं और कुछ यहां पे देखते हैं. तो सेम तरीके का पैटर्न जो है हमको यहाँ पे देखने मिलेगा. और यहाँ पे हम एक, I'm sorry, I just inserted a vertical line. I need to insert a horizontal line. So look at this over here. So ये हमारा breakout हो गया. There is a breakout which has happened and there is a strong rally which has happened. So hourly chart में confirmation मिला, daily chart में confirmation मिला, good signal. And look at the volume, beautiful volume. 20-30 lakh shares of one in an hour is being basically done. Now let's analyze this. यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी similar चीज हुआ. There was a resistance, price came down, breakout happened. Breakout happened, the stock went high, similar pattern. And now the stock came down. अब यहां पे देखेंगे तो ये रिजेक्शन कहलाएगा. देयर इज अ ब्रेकआउट एंड नाउ देयर इज अ रिजेक्शन. दैट मींस माय रेजिस्टेंस हैज नाउ बिकम अ सपोर्ट. व्हाई दिस इज अ रिजेक्शन? क्या हमको आर्ली चार्ट में कोई भी ऐसी कैंडल देखने मिल रही है जो बेसिकली ये ब्लू लाइन के नीचे क्लोज हो रही है? द आंसर इज नो. राइट, दैट मींस प्राइसेस आर कमिंग डाउन बट इट इज नॉट क्लोजिंग बिलो द ब्लू लाइन. दिस इज कॉल्ड एज अ रिजेक्शन. वंस द रिजेक्शन इज हैव हैपेंड, उसके बाद एक स्टॉक ने फिर से रैली लगाई फ्रॉम 277 टू 330 लेवल्स. राइट, नाउ दिस बिकेम माय रेजिस्टेंस लेवल. फ्रॉम देयर द मार्केट हैज कम डाउन. नाउ लॉट ऑफ पीपल हैव क्वेश्चन कि सर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल कहां से देखें? रेजिस्टेंस लेवल वो लेवल होना चाहिए आपका जहां से प्राइस में करेक्शन आया हो, पहला करेक्शन आया हो. तो आप यहां पे देखेंगे तो फर्स्ट करेक्शन यहां पे आया है and the prices have corrected to 20, 30, 40 rupees. Again it made an attempt. Again there is a correction. These two levels अगर आपको मिल रहे हैं तो आपका एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है. लेकिन अब जब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, ये आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट है. डू नॉट हेजिटेट टू एंटर एट सच कैंडल्स. ऐसे कैंडल पे आप हेजिटेट ना करें. राइट, बिकॉज ये एक सिग्नल है जहां पे बेसिकली आप ब्रेकआउट का कॉन्फर्मेशन है. पुट अ स्टॉप लॉस एंड एंटर द ट्रेड, यू नो, टू गेट अ गुड रिस्क. हो सकता है कि ये जो प्राइस है फिर से रिवर्स करके यहाँ पे आए. एंड जैसे मैंने कहा, आई वांट टू सी हाउ द प्राइसेस बिहेव एट दिस लेवल. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. लेट्स से दिस एग्जांपल. ओके, look at this candle. People will fear and sell their holdings at this candle, you know, from 760 to 670 within one candle. But any which ways, I've already drawn over here. Look at the resistance was there. The selling came in, broke, and the prices have been comfortably trading above the level. Prices ने एक high बनाया. Let's say ये information हमारे पास है, right? Prices ने high बनाया and then there is a low. My resistance now became a support level and there is a rejection. यहाँ पे एक rejection आया है and then the prices have traded above this level. Again a rejection. ये देखिए फिर से एक rejection आया है, right? The prices are not closing below the level.
Again one more rejection. The prices did not close below the level. Price यहाँ पे close नहीं हुआ है नीचे, right? And then look at this, how beautifully there is basically a green candle formation is being done over here. Now the interesting thing to look out over here is whether the prices will continue or will it come back, right? But 780 level has been breached and it's been basically trading above that particular level, right? So that is how basically on a daily chart I have just pointed out the support and the resistance level. You can also find such patterns or certain kinds of levels which you can see it over here. Since this is more about breakouts and reversals, I'm focusing more on that. Let us take Nifty. I'm sure that a lot of people would like to see Nifty ka chart, right? And see what is happening here. Okay, ये है हमारा लेवल. I'm sorry, ये थोड़ा सा हमको. Okay, great. This is spot Nifty level. Okay, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लेवल था, यहां से प्राइजेस रिवर्स किए थे लास्ट टाइम एंड इट हैड कम डाउन एंड राइट नाउ वी आर एट दैट लेवल ओनली. एक अच्छा खासा फॉल मार्केट ने दिखाया था, एट दिस लेवल एंड द प्राइजेस हैड कम डाउन, बट वी आल्सो हैड अ सपोर्ट एट दिस लेवल. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा खासा सपोर्ट था मार्केट में, राइट? देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे. अगर आप ठीक से एनालाइज करेंगे ये पर्टिकुलर लेवल्स पे, तो prices are trading below this particular level for quite some time now. Prices यहाँ पे गए, फिर से नीचे आए. There was one more time the prices tried to break out, but it failed and it came down. But when it broke out, हमने 4-5 कैंडल देख ली जहां पे 7,800 से 18,000 के आसपास निफ्टी चली गई. अब ये आज का कैंडल है, इसको आप गौर से देखिएगा, ठीक है? ये जो कैंडल है मेरे सपोर्ट लेवल पे आज ओपन हुआ. It opened at my support level. That means market opened at a support level, right? And from there a big green candle. 200-250 पॉइंट कुछ मार्केट आज नेगेटिव ओपन हुआ था एंड वहां से पूरा मार्केट ने रिकवर किया. अभी इसको शॉर्ट टर्म चार्ट में जाके देखते हैं एंड ये हम लोग 17,778 का जो लेवल है इसको हम लोग इंटैक्ट रखेंगे, इसको हम टच नहीं करेंगे. और आई एम जस्ट टेकिंग अ 5 मिनट चार्ट. ओके, नाउ लुक एट दिस. ओके, आई विल जस्ट show you. Look at this perfect opening. Market just opened at my level 17,778 all level, and from there one side rally. But there was a resistance at certain level also, which was from yesterday. The market had corrected, right? So market did not close above this level 17,088. तो अभी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ये होगा या इंटरेस्टिंग चीज ये होगा कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, ओपन होता है. Right now, market is basically trading in a range of 17,780 to around 18,000, and there is a resistance level which market is setting. If market opens above this level, very good. If market opens below this level, then we have to see how the market behaves then. But this is where you can see how the 5-minute candle, the first 5 minutes में आप देखिए कि how fast the green candle has been made और किस तरीके से बाइंग यहाँ पे आई हुई है. और ये दिखाता है कि हमको रिजेक्शन मिला है यहाँ पे, राइट? बट ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं. हमको रिजेक्शन मिला है बट ब्रेकआउट हुआ नहीं. तो ये मैं कैंडल को यहाँ पे ले देता हूं. तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन विच इज देयर. ब्रेकआउट अबाउट दिस लेवल इज येट टू हैपन, राइट? सो दिस इज हाउ बेसिकली अ रिजेक्शन एंड अ ब्रेकआउट विल अकर. आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. Okay, so let's say this is basically one of the charts of, I believe, this is Divi's laboratory. Okay, and यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो सेम पैटर्न्स आपको नजर आएंगे. I'll just delete this and I'll show you how you can basically draw this. So let me just push this up here. And you can see multiple rejections here. 0.1 rejection, price came down. This automatically becomes my level to watch out for. 46.25. Look at the back-to-back red candles. Price again made an attempt to go up, but was not successful. Came down. One more attempt. Did not close above this level.
and look at how the prices behave, right? All the supports were broken. Similarly, if you see over here, what is happening in this particular stock, and if I want to draw a simple rejection point, now look at this level. Okay, prices, this candle has been made well and good, but हमने क्या किया है, इसके ऊपर प्राइस ने कितनी बार सस्टेन किया? Price has sustained multiple times above this level, right? And from there it came up. Automatically this becomes my support level, 34.54. Price came to this level, respected, rejection, strong rejection, and bounce. Okay, so that is how you will see how the prices behave. These are pure price action trades. ये pure price action trade है. इसमें कोई analysis नहीं है. इसमें आपको identify करने हैं levels, patterns, chart. अगर आपको कोई patterns नजर आ रहा है, वो pattern आप identify करिए, and then you basically enter into a trade which is there, right? और नॉर्मली अगर आप देखेंगे ऐसे बुल मार्केट में और ऐसे टाइम पे अगर मार्केट आप यहाँ पे देखेंगे, there is a basically a very strong support which is there. Market tried opening certain level, but ये देखिए अब ICICI बैंक ने किस तरीके से रिकवरी दी. अगर यहाँ पे मुझे ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करना है, I can draw a simple triangle pattern which is there, right? This looks like a triangle. Let me basically bring down the resistance level. Candles were not closing above the blue line, right? Once it closed above the blue line, look at the rally. Today it opened somewhere between over here, but did not touch the blue line and again recovered. This is an ascending triangle kind of a pattern, which you can see it over here, right? So this is where you will see multiple patterns. You can see it on a 5-minute chart, daily chart पे देख सकते हैं, weekly chart पे देख सकते हैं, and so on. So again देखेंगे यहाँ पे तो हम यहाँ पे एक type का rejection बता सकते हैं. The prices have respected somewhere this level. Okay, prices have respected yet this level. It bounced and there was a rally which came in. Price again यहाँ पे open हुआ, break नहीं किया ये level को, and the prices recovered today. And that is basically you can see. You can confirm it with the volume. आप volume के साथ confirm कर सकते हैं कि कैसे price behave कर रहे हैं at certain levels. So चाहे वो intraday chart हो, 5-minute का chart हो, 15-minute का chart हो, you can look at the price patterns or basically your supports, resistance levels, and you can basically take a trade. Now, before moving on to Q&A, मुझे यहाँ पे एक last slide आप लोगों को दिखानी है जो important है, and I'm going to show you the slide. I will not be doing a talking much. मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये basically slides देखें, images देखें, आपके सामने एक images आएंगे, उसको आप देखें और understand करें. So I'll just go. Right. So if you don't want to take stress, if you don't want to basically, if you want to make your trading very, very smooth, less stressful, then always follow the rules. That is basically very, very important. Right. So trading mindset takes time to develop, right? It doesn't happen overnight. One has to analyze the chart. One has to actually take the trade. And in trading, knowing is not enough. You need to do it, right? अगर आप trade कर रहे हो और अगर आप basically, let's take an example, if you're reading a book on swimming, you cannot jump in the water and start swimming. You actually need to get into the water, move your hands and legs, and then you learn swimming. Same is with trading. So trading mindset takes time to develop over a period of time, right? So that is there. These 4 things are important. Your setup, first of all. So whatever we discuss right now is your setup. So let me give you an example over here. कल हमारा setup किस तरीके से होगा? Let me take Nifty, okay, or maybe Bank Nifty. आप Bank Nifty देखते हैं. Now look at this. This is a short-term chart, 5-minute chart. और इसमें हम यहाँ पे simple support line draw कर लेते हैं, right? There is a support line which is there, and there is a resistance line which is there. Okay. The market opens at certain level. Let's take an example. ये हमारी support line है. Market इसको respect कर रहा है. Okay. And market is basically, if you see, market has taken a support. It has bounced back.
taken a support once again, closed above this level. This automatically becomes my support, right? There is a resistance of 41,360, 41,600. If market opens above this level, this becomes my support level. Market opens below this level, this becomes my resistance level. And that is my setup for tomorrow. Market opens below this level, the possibility of market touching this level can be high. Okay. Market opens above this level. Again, there is no level upside because Bank Nifty almost is being trading at a very high level. So that is there. Okay. And look at this, how your rejections have happened over here. So again, this is a 5-minute chart. So look at this, how beautiful rejections you have got it over here. ये कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए, क्लोजिंग हुआ है नीचे, नहीं हुआ है, राइट? ये कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए, the first candle in the morning itself gave bullish signal that market is going to have a very, very strong recovery. The first candle in the morning itself, right? So market, the charts will tell you everything, how the prices are going to behave. आप इसको 15-minute chart देख सकते हैं, 5-minute का chart देख सकते हैं, and you will see how beautifully the prices have moved. Right? So that's the third thing. So your setup is important. Execute, win or loss, doesn't matter. At the end of the day, we need to repeat the process. This is the cycle of trading, right? Next is following the plan. If you follow the plan, it's a step-by-step process. The winning is there. But if you do not follow the plan, if you take any random trades without any thought process, if you do not control yourself, right, the staircase goes down. Next, trading is only 20% execution, 80% is patience. So you have to wait for your setup. We need to understand the power of patience in market, right? So unless and until you don't get your setup right, you don't get your levels right, wait. The market will come to you. Let the market come to you. We don't run behind the market, right? Next is we learn to do by doing. I've already discussed this, right? Technical analysis, psychology की book पढ़ के हम trading करना नहीं सीख सकते हैं. It's only through experience and practice, right? We need to stop judging ourselves or stop, coming at a conclusion based on a single trade. There are thousands of trades which we need to take over a period of time. So one trade ka outcome doesn't matter at all. Chahe wo profit ho ya consistency is over a period of time. If you keep on one after the other, that brings in consistency. To the bottom and market recover kar gaya, doesn't matter. It's not going to happen every day. We need to understand that how are we trading our setups. That is very, very important. And last but not the least is trading is actually very, very simple. Lot of people add too many things in their trading chart, right? And the most important thing about technical analysis, the price should be visible. Don't try to use too many things on a particular chart. Understand what kind of a trader you are, see the chart and then take a trade based on your setups. These are few things which I wanted to show you. We will now move towards question. Apart from that, your risk reward ratio has to be some